ओके, तो लास्ट टाइम हमने किया था, हाँ बीच में वो फिर बंद ही हो गया था अचानक लैपटॉप, पता नहीं कभी कभी इसको हो जाता है, शायद इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, नेवरदलेस जो हमने किया था लास्ट टाइम वो था अबाउट रिफ्लेक्सिविटी। पहले तो ये कि रिफ्लेक्सिव हमने कहा था x, दिस मैपिंग psi फ्रॉम x टू x डबल स्टार, जिसको हमने कहा था कैनोनिकल एम्बेडिंग, कैनोनिकल एम्बेडिंग। तो अगर ये ऑन टू है, सपोज दिस मैप इज ऑन टू, देन x इज रिफ्लेक्सिव। फिर हमने एग्जांपल्स भी की थी, कोई रिफ्लेक्सिव है कौन नहीं है, x इज रिफ्लेक्सिव। ओके, हाँ और क्या था हमें, हाँ फिर ऑफ कोर्स वी मीन दैट इसकी जो इमेज है वो ऐसा x डबल स्टार है, लेकिन वो वाला x डबल स्टार, नो दैट x double star at x star is equal to x star at x for all x star belonging to x star. मतलब this was our definition of this canonical mapping. Okay, तो अगर ये ऑन, अगर सारे के सारे फंक्शनल इसी टाइप के हैं x डबल स्टार में, देन वी सी इट्स रिफ्लेक्सिव। और फिर हमने दिखाया था कि p जो है 1 लेस देन infinity is reflexive, L1 is not and L infinity is not. रिफ्लेक्सिव का मतलब है कंपैरेटिवली सिंपल स्पेस। ना अगर हम कॉम्प्लिकेसी देखें ना स्पेसेस की, तो सबसे सिंपल होंगी फाइनाइट डायमेंशन, उसके बाद आएगी जो हमने पढ़ा नहीं अभी, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, उसके बाद आएगी रिफ्लेक्सिव स्पेसेस। मतलब इस तरह से इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। फाइनाइट मतलब ऑफ कोर्स वेरी सिंपल, उसके बाद यही इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, उसके बाद रिफ्लेक्सिव स्पेसेस, because every inner product space is a reflexive space. I mean complete होना चाहिए। हाँ फिर हमने किया था ये भी कि अगर x is reflexive, then what, x star is reflexive, and every closed subspace of a reflexive space is reflexive. Okay, every closed subspace, हाँ लेकिन मैंने कहा था, जो मैं शायद मुझे उस वक्त ध्यान नहीं आया था, मैंने कहा था सपोज अब x star is reflexive। अब अगर x star, और हमें ये भी पता है psi of x is isometrically isomorphic to x which is contained inside x double star. So I can think of x as a subspace of x double star. Okay. Okay. तो okay, अगर x star रिफ्लेक्सिव है, तो हमने किया ना अगर x रिफ्लेक्सिव है तो x star रिफ्लेक्सिव, उसका मतलब अगर x star रिफ्लेक्सिव है implies that x double star is reflexive, है ना? Okay, let's suppose x is complete। अगर रिफ्लेक्सिव है, suppose x is complete, यानी x is a Banach space, then psi of x is a Banach space, which is a subspace of x double star, which is isometrically isomorphic to x। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ psi of x is a closed subspace of x double star, लेकिन x double star तो रिफ्लेक्सिव है, तो closed subspace of a reflexive space is reflexive, so it implies that psi of x is reflexive, which is the same thing as x is reflexive। कहने का मतलब है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ? अगर x star रिफ्लेक्सिव है, तो हमने पहले किया था x is reflexive
implies x, ये तो हमने किया था पूरा का पूरा थ्योरम, x स्टार इज रिफ्लेक्टिव, लेकिन उसी से ये भी इंप्लाई होता है कि अगर x स्टार रिफ्लेक्सिव है तो x भी रिफ्लेक्सिव होगा। अब हमें सिर्फ ये सोचना है कि इट शुड बी अ बानाक स्पेस, लेकिन अगर वो बानाक स्पेस नहीं होगी तो रिफ्लेक्सिव तो हो भी नहीं सकती। व्हाई? बिकॉज x डबल इज ऑलवेज कंप्लीट। तो अगर ये अपने डबल डबल के बराबर है तो ये उसी से रिलेटेड था। खैर, लेकिन मुझे लगता है हमने आगे भी बढ़े थे, हमने फिर डिफाइन किया था व्हाट वी कॉल सेपरेबिलिटी। सेपरेबिलिटी में हमने किया था a normal linear space X is separable if it contains countable dense subset. कहने का मतलब, that is A is a subset of X, A is countable, and X is equal to A closure. जैसे मैंने कहा था फिर R is separable because Q is a subset and Q is, and what do we mean by dense? Okay, हाँ ये अगर हम what do we mean by this thing? Is dense in X. It means for every X belonging to X, there exists some Y belonging to, let me call it A, such that X minus Y is arbitrarily small. Arbitrarily small. मतलब less than any epsilon positive. We can find another thing in the dense subsets, that it's arbitrarily close to the bigger set. जैसे में पता है, मतलब suppose X is a real number, then there always would, for any epsilon positive, there exists a rational number Q such that, ये तूने बहुत इससे पहले किया होगा, X minus Q is less than epsilon. Can always find a rational. That means उसी का मतलब हुआ ये definition के हिसाब से कि R is Q closure, and since Q is countable, therefore R is separable. लेकिन हमने शायद उसके आगे भी थोड़ा कुछ किया था, वो ये था कि हमें बताना था LP जो है for 1 less than P less than infinity, ये अपना थ्योरम मान लो, is separable. Okay. तो उसके लिए हमने क्या किया था? प्रूफ। पता नहीं कहीं हम पहुंचे थे प्रूफ में, तो हमने लिया था, पता नहीं अगर तुम उसको भी देखोगे, हमने किया था M P the set of all sequences of the form, मतलब ऐसी सभी sequences which would only finitely many non-zero terms but all are rest are zero, and yi belongs to Q for all I. तो हमें रैशनल नंबर्स के जो इस टाइप की सीक्वेंसेस होंगी, देन ऑफ कोर्स m इज काउंटेबल, देन m, जिसको अगर मैं एज अ सेट लिखूं, बेटर ऐसे था लिखना, पता नहीं मैंने वहां कैसे लिखा, for I belongs to Q, ठीक है, is countable because it is a countable union of countable sets. You know, you just fix others and let this run, so that would be a countable set, and fix the other one, let the other run, so that would again be a countable set. So it would be a finite union of countable sets, hence countable. Countable पता है ना? Countable पता है ना? We show that, पता नहीं, जवाब ही नहीं. We show that. Okay, very good.
We show that M is dense in LP. It's rather easy actually. Now let x be equal to xn. N runs from 1 to infinity, belongs to this my L sub p, the pth power summable sequences. मतलब arbitrary हमने लिया इसका. Then for any epsilon positive, there exists n belonging to the set of natural numbers such that summation I runs from n plus 1 to infinity, modulus of xi raised to power p is less than epsilon. हाँ हमने कहा था epsilon by 2 कह लो, because we're going to use it. Okay, तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसकी टेल जो है it can be made arbitrarily small. After a certain stage it would be less than any positive number, because अगर वैसा नहीं हुआ तो वो converge कैसे करेगी? And we know that p to power summable sequence का मतलब ये है summation xi p जो है वो less than infinity है, because मतलब I runs from 1 to infinity. तो एक स्टेज के बाद इसका जो बचा हुआ सम होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, वरना ये converge, otherwise it won't be less than infinity. Let's call this equation 1. Okay, ये हर एक सीक्वेंस के लिए हमारे पास है. Now we are going to use now since reals, yeah, since Q is dense in R, therefore for any xi, I runs from 1 to n. There exists, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ xi belongs to R. There exists yi belongs to Q such that mod of xi minus yi, जो मैंने अभी बोला था, can be made less than any positive number. Let me write it as epsilon 2n whole raised to power, and we call it 1 by p, ताकि मैं इसको जरा एडजस्ट कर सकूं. Now for there exists, okay, yi belongs to q. We can, for every real number के लिए हम rational number ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसकी ये property हो, which would imply that summation xi minus yi should be raised power p should be less than epsilon raised power p divided by 2n. So which would imply summation I runs from 1 to n mod xi minus yi raised to power p is less than epsilon by 2. Okay, तो अगर ऐसा है, it follows that now the norm of x minus y, उनका pth norm raised to power p should be, it's by definition, summation xi yi whole raised to power p, I runs from 1 to infinity, जिसको मैं break कर सकता हूँ. Summation I runs from 1 to n xi minus yi raised to power p, sorry यहाँ पे raised to power p है, plus summation x I minus 0 I runs from 1 to n plus 1, sorry I runs from n plus 1 to infinity. मतलब क्योंकि yi n के बाद 0 हो रहे हैं, है ना, where of course yi any components है ना, जो मेरा m set था, it was like y1 y2 to yn, उसके बाद 0 0 0, ऐसा सेट था अपना जो m था. Okay, which by this is epsilon by p divided by 2, and then plus इसको भी माना है मैंने epsilon by p, ये वाला by equation first, because it is the tail of a convergent sequence. So epsilon by p divided by 2, which implies that for every x belonging to LP, there exists y belonging to my set M
such that norm of x minus y p is less than epsilon for all epsilon positive, which implies that m is dense in LP. हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक ही चीज की, मैंने ली रियल सीक्वेंस। अगर मैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस लेता तब भी कोई फर्क एक्चुअली पड़ता नहीं। क्यों? वो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंपोज्ड ऑफ टू रियल नंबर्स अल्टीमेटली, है ना। सपोज दे वर कॉम्प्लेक्स, सपोज यू हैव गॉट zi, इन प्लेस ऑफ zi वुड बी xi। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि मैंने y वो लिया था। ओके, इट वुड बी ai प्लस bi। अब i से गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आयोटा है, तो ai प्लस आयोटा bi। अब ये i सेम नहीं है ना। चलो मैं k लिख देता हूँ। तो मतलब अल्टीमेटली जो होता, इट वुड हैव अगेन डिपेंडेड अपॉन दीज रियल नंबर्स, एंड कॉम्प्लेक्स के लिए भी ये ट्रू होता है इफ आई टेक कॉम्प्लेक्स स्केलर सीक्वेंसेस। अब फिर L इंफिनिटी इज नॉट सेपरेबल, ऑफ कोर्स उसके लिए ये नहीं चलेगा ऑब्वियसली। लेकिन ये छोटी सी तुम किताब, ताकि तुम किताब भी पढ़ो कुछ इधर उधर से, let me leave it to as a home assignment। ओके, होम असाइनमेंट रखते हैं। वैसे शायद तुम्हारे नोट्स में किसी की होगी। ओके, अब सेपरेबिलिटी से मतलब एक और रिजल्ट है, वो ये, if x is a normal linear space, normal linear space, then अगर x star सेपरेबल है, it implies that x is separable। ओके, वो एक्चुअली what I'm trying to say, separability actually gives somehow the size of, मतलब of course these are all infinite sets, लेकिन फिर भी कितना बड़ा, मतलब it's a rough estimate, sort of an estimate of the size of the vector space। separability का मतलब वो छोटा है। तो इसका मतलब जब मैं कह रहा हूँ L infinity is not separable, तो you should think in terms of कि L infinity must be really big than any other LPs। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर x स्टार सेपरेबल है तो x सेपरेबल है। वजह ये है क्योंकि x स्टार इज बिगर देन x। उसकी वजह है हान-बानाख थ्योरम। हान-बानाख थ्योरम में कहता है कोई भी ले लो नॉन जीरो x, यू कैन फाइंड एन f विद सर्टेन प्रॉपर्टीज। यानी यहाँ अगर कोई है तो उसके मुकाबले में यहाँ तो है ही, इनफैक्ट करोड़ों है। तो इसका मतलब x स्टार इज यूजुअली बिगर। अब अगर x स्टार सेपरेबल होगा, यानी अगर x स्टार समवट स्मॉल है, तो x भी हम, क्योंकि ये तो इससे बड़ा ही होता है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी अगर x सेपरेबल है, it need not imply that x star is separable। और रीजन हम अभी बता सकते हैं। देखो, L1 is separable, but L infinity is not, यानी L1 star जो है, जो कि बराबर है, हमने किया है L infinity is not separable। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर x सेपरेबल है तो x स्टार भी, लेकिन ये ट्रू है कि अगर x स्टार सेपरेबल है तो x भी सेपरेबल होगी। प्रूफ। Now since x star is separable, it has a countable dense set। So let me call it F1, F2, let this be a countable collection inside। Let X1, F1, F2 be the countable dense subset of X star। अब मुझे क्या दिखाना है? I have to show that X is separable, तो मुझे ढूंढना है countable dense subset of X from this। Now X star में है means they are bounded linear functionals, right? Okay,
for each n, ये जो भी x1 है x2 है, for each n greater than equal to 1, we can choose a vector. We can choose a vector. We can choose a vector. Let me call it xn belonging to x, such that एक तो उसका norm 1 है, and fn evaluated at xn in modulus is strictly bigger than or equal to, it's bigger than or equal to, यहाँ लिख लो such that, because this is the condition we're going to use 1 by 2 into norm of fn. ये होगा because of the definition of the norm of fn. ये जो norm of fn का definition है, इसी की वजह से ये होगा. और अगर मैं यहाँ साइड पे दिखा दूं, मेरे कहने का मतलब है 1 by 2 norm of fn of course would be strictly less than norm of fn, because 1 by 2 is less than, which is equal to supremum of this f of x norm of x equal to 1. मुझे लेना है सुप्रीमम ओवर ऑल वेक्टर जिनका नॉर्म 1 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इससे बड़ा है, देखो सपोज देयर एग्जिस्ट नो वेक्टर लाइक दिस. सपोज ऐसा है कि f of xn fn xn in modulus is less than equal to 1 by 2 norm of f of fn of xn for all xn या for all x, चलो मैं x लिखता हूँ, equal to 1. उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब सुप्रीमम भी लेस देन इक्वल टू 1 by 2 नॉर्म ऑफ, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, गलत लिखा मैंने यहाँ पे. मैंने कहा सपोज ये सच ना हो, जो ना मैं कह रहा हूँ हमेशा सच होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि ये इससे बड़ा होना चाहिए. सपोज ऐसा ना हो, मैंने फिर से गलती की, फिर से यहाँ इसको रब करना भी. Suppose that's not true. Suppose this is less than equal to norm of fn. So that means supremum would be less than equal to norm of fn, which would imply supremum to norm, इसका मतलब norm of fn would be less than equal to, which is obviously not true, because that means 2 is less than equal to 1, which is not the case. Okay, so this must be true. We should always be able to find some vector, otherwise there would be a problem. And let now, अब जो मुझे मिला नहीं xn's which are of norm 1, let y be equal to span, अगर मैं लूं इन सभी वेक्टर्स का जो ना मैंने अब मिले, मैंने हर एक fn की मदद से एक xn ढूंढा x में which has this property. Let me call this star. I take y to be the span और फिर उसका closure. Now I take the span of all these x's, xn's, which would be a vector space. Then I take the closure, which would be a closed subspace. We claim that, अब हमारा claim ये है, y is equal to x. अगर मैं दिखाना चाहता हूँ x is separable, तो मुझे फिर दिखाना है एक तो ये कि y is dense in x, है ना. दूसरा क्या, दूसरा मुझे दिखाना है it is countable, क्योंकि ये तो काउंटेबल है, उसका स्पैन भी काउंटेबल होगा, दैट्स एन इश्यू, है ना. और फिर उस स्पैन का क्लोजर भी काउंटेबल होगा, है ना. सो वी हैव टू शो दैट, हमारा क्लेम पहले ये है कि y इज इक्वल टू x, बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट. यानी उसका मतलब हो ना, ये जो अंदर का सेट बैठा हुआ है ना, स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स, इट इज डेंस इन x. तो लेकिन मुझे फिर दिखाना है वो काउंटेबल भी होना चाहिए. नेवर. ओके, नाउ वी क्लेम दैट y इज इक्वल टू x फॉर इफ, अगर y x के बराबर ना हो, then y is a proper closed subspace
of x. Then and for every a belonging to x minus y, yani which is inside x but not in y, by Hahn-Banach theorem, there exists f belonging to x star such that f of y is 0 for all y belonging to y and f of a is not equal to 0. So अगर ऐसा है then given any epsilon positive, then for any epsilon positive we choose, क्योंकि fn are dense, we choose some fn such that norm of f minus fn is a dense subset, so I can always choose fn which is very very close to f is less than epsilon. So which would imply that modulus of fn at a, which would be less than equal to right, which would be less than equal to modulus of should I write it as एक मिनट ओके तो इट इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ लेकिन यहाँ पे मैं एक ही चीज करना भूल गया, क्योंकि a बिलोंग करता है x माइनस वाई में, हाँ वैसे कर सकते हैं। तो चूंकि a बिलोंग करता है x माइनस वाई में, चलो मैं we can find a belonging to x minus y। देखो दिमाग सोचने की बात ये है कि x minus y में कोई चीज है, राइट? सो a कहाँ पे है? x में है, y में नहीं है, एंड y इज अ सबस्पेस, y इज अ सबस्पेस। तो उसका मतलब a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक सबस्पेस में आइडेंटिटी तो होगी ही। अब अगर y में नहीं है और x में है तो इट हैज टू बी अ नॉन जीरो एलिमेंट। अब अगर नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मतलब a भाई नॉर्म a जो है, चलो मैं ऐसे लिखता हूं a प्राइम इसका नाम, तो ये भी y में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये है, ये तो सब स्पेस है, फिर मैं नॉर्म a से मल्टीप्लाई करूंगा फिर तो, है ना? देखो a जो प्राइम जो है वो x में है और y में नहीं है, बट इट कैन नॉट बी जीरो। तो उसका मतलब आई कैन चूज माई a दिस सच दैट नॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू 1, यानी एक ऐसा वेक्टर मैं चूज कर सकता हूं, वही मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो फॉर, यानी यूं लिख लो, वी कैन चूज a, यहां जरा लिख लेना ये, विद नॉर्म ऑफ a इक्वल टू 1। बस इतना ही मुझे चाहिए था, क्योंकि हम चूज कर सकते हैं, क्योंकि y में जीरो मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। ओके, और ये सबस्पेस है, तो ये अगर a प्राइम वहां बिलोंग नहीं करता तो a प्राइम में नॉर्म a भी इसमें बिलोंग नहीं करता। एनीवेज, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू इट्स सुप्रीमम, और सुप्रीमम है नॉर्म ऑफ f, so it should be norm less than equal to norm of fn, which we know is less than or equal to twice fn of xn। वो क्यों? वो हमने पहले ही इसको ऐसे ही डिफाइन किया था xn को, बाय फर्स्ट, या जो भी मैंने लिखा है इसको बाय फर्स्ट, दिस शुड बी ट्रू। दिस thus norm of f of a is less than equal to norm of f of a minus fn of a। ओ मैंने कुछ गलत लिख दिया, रुको 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 रुको, मैंने यहाँ ये कंप्लीट बाय वन, दिस इज इसका कंटिन्यूएशन है, एफ एन एक्स एन विच इज इक्वल टू इसी का ट्वाइस, मैं लिख सकता हूं इसको एफ एन ऑफ एक्स एन माइनस
f of xn. Why? Because f of xn is 0, xn belongs to y. Since xn belongs to y, और y में जो भी एलिमेंट है उसके लिए f 0 है. So which can be written as twice fn minus f of xn, of course, which is less than equal to twice norm of fn minus f into norm of course, xn. और xn का नॉर्म भी 1 ही है. As we know, हमने लिया है कि जो xn है उनका नॉर्म 1 है, तभी तो ये इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है. So which is equal to twice norm of fn minus f. But fn minus f is less than epsilon. It implies that fn of a is less than equal to 2 epsilon for any epsilon positive. So what does that mean? That means एक ही चीज हो सकती है कि fn of a is 0. A contradiction. Because मैंने क्या किया? गड़बड़ की? हाँ मैंने गड़बड़ की. इसको भी थोड़ा fn of a is, मुझे f of a चाहिए. ये क्या हो रहा है आज? ओके, तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, लेकिन f of a अगर लेस देन एप्सिलॉन तो ये fn है अभी तक. 10 अगर मैं अब इसको ऐसे लिखूं, f of a जो है इज लेस देन इक्वल टू, थोड़ा ऐसे ही कुछ करना है, f of a माइनस fn of a प्लस fn of a. मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज की, मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज की. राइट? नाउ दिस इज लेस देन, नाउ दिस इज f माइनस fn of a. f माइनस fn of a किससे होगा? देखो, fn of a जो है, f of a minus fn of a अगर मैं देखूं, plus fn of a, fn of a is less than 2 epsilon. How about this fa minus fna? Can you tell me? हाँ चलो मैं यार, it is less than 3 epsilon. लेकिन मैं ये less than 2 epsilon है वो हम देख, मतलब उतना मसला नहीं है, क्योंकि मैं मान चुका हूँ norm of fn minus f is less than epsilon. ठीक है? और should I directly go here? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं. fn of a is less than epsilon. मैंने क्या लिखा है यार? f of a minus fn of a. ओके ठीक है. देखो fn माइनस f जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है. हाँ ये लेस देन 2 एप्सिलॉन है, तो ये लेस देन, ठीक है. तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fn ऑफ एनीथिंग जिसका नॉर्म 1 है. एनीथिंग जिसका नॉर्म 1 है, अगर ये 1 है, इट इज लेस देन एप्सिलॉन. इसका मतलब अगर सबसे बड़ा है लेस देन एप्सिलॉन है तो सारे के सारे होने चाहिए, यानी fn of x minus f of x is less than epsilon for all vectors with norm 1. और a का norm जो है वो 1 है, which would imply that fn of a minus f of a is less than epsilon. Okay, तो इसका मतलब ये जो है ये less than epsilon है because a का norm 1 है. a का norm हमने 1 लिया था, so we are done. तो इससे हमें मिली एक contradiction. So it is true for all epsilon positive. तो which would mean what is less than all positive numbers and is non-negative? तो वो तो 0 ही होगा because it is modulus, है ना? मैं तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं सुनता वैसे. ओके, सो इसका मतलब हुआ f a is equal to 0, a contradiction. Therefore पहली बात, y must be equal to x. ओके, अब हमें सिर्फ ये दिखाना है, ये जिसका क्लोजर है, यानी हमें दिखाना, हमें ये बताना है स्पैन ऑफ x1 x2 is dense. अगर मैंने ये बता दिया, so what remains to be shown, चलो मैं यहाँ दिखाऊँ, yeah, the only thing that remains to be shown is
that span of x1, x2 is countable. Okay, so is it countable? So if we take all rational linear combinations of x1, x2, xn up to infinity, then अब ना इसको लिखना जरा मुश्किल है, then that set is countable, which implies that, and also if चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, if a, चलो ऐसे लिखना है better, is equal to summation ai xi finite such that ai belongs to q, इसको ये सेट मेरे कहने का मतलब है, a is countable and a closure is equal to span of, रीजन वही है जो इससे पहले एलपी के स्पैन के टाइम हमने किया, which implies that y is equal to a closure and hence x is equal to a y closure, which is नहीं sorry मैंने गलत लिख दिया, y is equal to a closure and hence x is equal to a closure. ठीक है, y is equal to actually a closure का closure क्योंकि वो इसका closure है, ठीक है, and hence x is equal because a closure का closure is a closure, एक ही बात है. So and hence x is, अब चूंकि closure of a countable set है, x is separable. चलो ये फाइनली खत्म हो गया, लेकिन हाँ अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे, शायद नोट्स में मैंने ऐसे नहीं लिखा, बट इट जस्ट टू कीप इन माइंड कि हम किसकी बात कर रहे हैं. एक क्लोजर वुड देन बी द स्पैन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और इसका क्लोजर y है उसका, बट y इज x, तो क्लोजर का क्लोजर आ जाएगा, बट विच इज द सेम थिंग एज ए क्लोजर, because a double closure is always a closure. Why? Because closure of a closed set is itself.